You were associated with the Congress for 40 years. 40 years is a very long time. But since last 8-10 years, the Congress was almost disconnected with the people, with the their own workers. I am a social worker more than a political. I want to do something for the state, something for my constituency, and I want to change the life of the people. Finally, after so many months of thinking, rethinking, I decided to, and I am happy that the party I have did my sharper attack previously. They have wholeheartedly welcomed me, and I decided to work as a worker of the Bharatiya Janata Party. Because Arjun Bhai, while he was with the Congress, has been one of the sharpest critics. No compromising. Right? He has never compromised. Congress party leadership, they are, the taking issue, forgetting thing, taking issue, forgetting thing. And the party can't run as a part-time. Okay. It is a full-time mission. It should be a full-time mission. So you mean to say that Congress does not have full-time politicians? Even my Muslim friend asked me to support the Pran Pratishtha Mahotsav because they don't want to, intermingle this particular issue for a long time. Told that, of course, we have got the invitations, and we would go at our own time, or we would send some representative. Instead of this, the statement was like that: we are declining the Pran Pratishtha Mahotsav invitation. Okay. Moreover, the statement was issued in a phrase that, it is a political project of the RSS BJP. So what? It is, here you are hurting the sentiment of the people. As a politician, I should not. Which means that at that point of time, perhaps the Congress was not against the temple. Yeah. Right. And so what do you think has changed now that such a decision was taken? I can't understand. Okay. I could not understand why they have taken such a step. Right. Yeah. I saw your post on X where you said that this was a wrong stand. Yeah. Okay. It is a political decision. We should stay away from such type of the political decision. Okay. Right. So before that, you said that last 8 years or something you were feeling suffocated in the party. Can you give us one or two examples of what suffocated you then? Or any national top leader of any political party should behave, not in such a way. Okay. He should be above everything. मतलब above everything का मतलब आप क्या? Means जो एक्शन आपका है वो स्ट्रीट लीडर की तरह नहीं होना चाहिए। पर वो तो भाजपा की भी पहले 2 ही सीट आती थी, फिर भी उनको ओपोजिशन का दर्जा तो दिया जाता था ना पार्लियामेंट में। नहीं, पार्लियामेंट में नहीं दिया जाता था, गुजरात में दिया जाता था। गुजरात में 2000 में 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जो 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस समय दिया था, उसमें ना नहीं। लेकिन दिल्ली में तो जो ये 10% वाला आज तक चला है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जाता है। अगर लालच भी होती मुझे तो मैं आज क्यों जाता? आज तो बीजेपी को कोई मेरी ज़रूरत भी नहीं है। गुजरात में उसके पास 156 सीट है। डेमोक्रेसी के लिए आपको
strong with opposition भी चाहिए. Hello and welcome to Vibes of India. I'm Deepal. Today we have with us a very special guest. Till about 3 days ago, he was one of the senior-most Congress leaders of Gujarat. Known for his sharp attacks on the regime, for his analytical, in-depth studies on Gujarat's budget, economy, and the social situation and dynamics of the state. He has been a force in himself, fighting against the government, the system. But now, this gentleman snapped off his 4-decade-old ties with Congress, the only party he had been associated with all his political life, and has joined the BJP. Welcome Arjun Modhwadia. Thank you. To Vibes of India. Why is Arjun special? Mainly because in 2022 Assembly elections of Gujarat, when the Congress could muster up only 17 of the 182 seats, Arjun has been one of the persons who won handsomely from Porbandar in Saurashtra. So, he became one of the 17 MLAs, the lowest ever that the Congress tally has ever reached in Gujarat. So today we will be having a very free, fair, candid discussion on various topics with Arjun भाई, और हम कई सवाल ऐसे करेंगे जो शायद सिलेबस में ना भी हो. जी, कोई बात नहीं. Arjun भाई, I would want to start with that. You know, you were associated with the Congress for 40 years. 40 years is a very long time, right? Yeah. So what was the tipping point that you decided to quit the Congress? I was associated with the Congress since my student's age, and even as a student's leader. Then I became the block president of the Porbandar Youth Congress. Again elected in 2002 as a MLA. At that time, the pro-BJP wave was there. And in first year only, I became the chief whip of the party. And second year, I became leader of opposition. Then in 2011, I became president of Gujarat Congress, and continued till the 2015. Out of my 40 years political career, I led the Congress almost 20 years, and I was one of the pillar of the Congress party, and out of this almost 12 years against the Bharatiya Janata Party government, which was led by the not less than the respected Narendra Modi and present Home Minister, respected Amit Shah. He was also Home Minister at that time. I did my duty with commitment and sharper attack. I agree with you. But since last 8-10 years, the Congress was almost disconnected with the people, with their own workers too. And I have tried my best to communicate with the leadership, but unfortunately I was miserably failed to convince or communicate with the leadership. That's why I was in puzzle what to do. Okay. Because I am a social worker more than a political worker. I want to do something for the state,
something for my constituency, and I want to change the life of the people. But I was suffocating in my party, and finally, after so many months of thinking, rethinking, I decided to quit Okay. and join the BJP under the leadership of respected Narendra Bhai. And I am happy that the party I have did my sharper attack previously. They have wholeheartedly welcomed me, and I decided to work as a worker of the Bharatiya Janata Party and contribute the Viksit Bharat vision of the respected Prime Minister. As you rightly mentioned, Arjun Bhai has always been a leader of conviction, courage, and candidness. As he himself admitted, that he has always. It's not that now that you've joined the BJP, you are denying. Yeah. You have attacked the BJP government, yes, because yes. that, I believe, was a part of your brief, a part of your duty. Duty, yes, yes. Right? Yes. So, And I'm, thankful to the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister of the country that they both are generous enough to accept me with respect in the party. exactly. They allowed me to which join. is very interesting and surprising, because Arjun Bhai, while he was with the Congress, has been one of the sharpest critics. No compromising. Right? attitude. He has never compromised, whether it has been on ideology, on economics, or social issues of Gujarat. He always did his duty with outstanding courage and conviction. So, but you just mentioned a word that caught my attention. You said since last 8 or 10 years, you feel that the Congress has lost its connect. Can you please elaborate on that? So many issues is there. When the one side in BJP, the towering leadership is there. Not only towering, but the leadership who work for the nation 24/7. No nonsense, no seeing backwards. Then and they are connecting to the every segment of the society, from children to youth, to elders, to women, to poor, to everyone. They are trying their best. And Congress party leadership, they are the taking issue, forgetting thing, taking issue, forgetting thing, and the party can't run as a part-time. Okay. It is a full-time mission. It should be a full-time mission. So, you mean to say that Congress does not have full-time politicians? Not all, but who are leading at Delhi. I don't see that they are full-time 24/7 workers. Okay. Number two, they are disconnected. Why I am saying disconnected? From the very beginning, the Congress stand was clear that Ram Mandir issue, we accept the verdict of the court, Supreme Court. The stand was very clear. This similar stand was taken by the opponent party of the Ram Mandir issue, who don't want to allow the construction of the temple. All have accepted that Supreme Court gave judgment and Mandir would be taken up. And
Congress was the similar opinion. Of course, we have not fight for the temple, but the opinion was that they would respect the opinion of the court, verdict of the court. Narendra Bhai was, was part of this Ram Temple movement. He became the Prime Minister, and as a Prime Minister, the Ram Janmabhoomi Trust have invited Prime Minister to perform the Pran Pratishtha Motsav, as was done in the case of the Somnath Temple. Somnath Temple constructed and Pran Pratishtha Motsav was done by the President of India, Rajendra Prasad. So why only Prime Minister is performing Pran Pratishtha Motsav, and the sentiment of the whole of the country have been joined with the temple movement and temple construction. Even my Muslim friend asked me to support the Pran Pratishtha Motsav because they don't want to, intermingle this particular issue for a long time. And leadership have decided not to go. No, that is okay. They might have told that, of course, we have got the invitations and we would go at our own time, or we would send some representative. Instead of this, the statement was like that: we are declining the Pran Pratishtha Motsav invitation. Okay. Moreover, the statement was issued in a phrase that, it is a political project of the RSS BJP. So what? It is, here you are hurting the sentiment of the people. As a politician, I should not. I should respect the sentiment of the people. That means who have drafted or who have instructed to draft such a press note, they are not as a person of the public life. Okay. So I felt that is why should we give the political color to this? We should, of course, they can say that we would go with family afterwards, and they also, after this particular statement, so many Congress leaders have gone to the temple. Okay. They have darshanam. Okay. But that means that nobody have a political mind or understanding of the people's sentiment. So it was so frustrating to every workers that why we are making such non-issue issue. Okay. So after that, not only particular that one issue, but so many issues are there. So that could have been your tipping point, right? Tipping, yes. It is accumulated. It is high. Yeah, because you said since last 8 years, Congress has lost disconnect. Yeah. So, but do you think what could be the reason that the Congress did not want to support this Pran Pratishtha Mahotsav? Because as we know that the gates, right, to the temple were opened during the Congress regime when Narasimha Rao was the Prime Minister. Yeah. Which means that at that point of time, perhaps the Congress was not against the temple. Yeah. Right. And so, what do you think has changed now that such a decision was taken? I can't understand. Okay. I could not understand why they have taken such a step. After that, in Gujarat Vidhan Sabha, I was Congress MLA. Right. And Ram Temple, Thanksgiving resolution have been moved by the Bharatiya Janata Party member. And I have supported it.
as a Congress member. I have spoken it on behalf of the Congress member. But I think entire party supported it, right? Yeah, here entire party has not me. Entire, like, I have taken stand, not my own. it was the party stand. Party stand. Even Aam Aadmi Party supported it. Yeah, but everyone supported. Then why these particular people? Right. They So were there is sitting on the top. there is no logic that No you logic, yes, decline the invitation There is and no then the party on the whole supports the Yeah. resolution. That means they have no sense Hmm. to judge the people's sentiment. Okay. They are far, far away from the people's sentiment or people connect. Okay. So you said, that you tried to draw the party high command's attention. So This many times. disconnect. This particular issue I have drawn the attention publicly Okay. by making a statement on the tweet. Okay. Right. Yeah, I saw your post on X where you said that this was a wrong stand. Yeah. Okay. It is a political decision. We should stay away from such type of the political decision. Okay. Right. So before that, you said, that last 8 years or something, you were feeling suffocated in the party. Can you give us one or two examples of what suffocated you then? It's a long issue. It's I can't, reveal everything. But they are not disconnected with the people, with the dedicated worker, but even disconnected with the leaders. Leaders too. Leaders too. Okay. So it's unfortunate for any political party to disconnect with the leaders. Okay. So what could be the reason for this? I can't understand. Okay. I think you might have seen the interview of the Ghulam Nabi Azad. Mm-hmm. What he narrated Okay. is almost, The leftists similar. dominating the coterie. No, non-political Okay. persons. Okay. Dominated. Okay. Maybe the leftist or any other. Okay. Who had nothing to do with the politics. Nothing to do with politics. Nothing to do with the politics, nothing to do with the elections. Whether they have no experience of, winning or defeating in election. So that is a scenario. Okay. So, when you joined Congress, as you told us that since your student days you were associated with Congress. So, if we rewind back to 40 years, there would be some things which would have attracted you to the Congress then. What was it? I am a staunch follower of the Mahatma Gandhi. Okay. I read, so many things about Gandhi. So this particular ideology have attracted me, and I joined the Congress party. I tried to be there, but after all, if you are disconnected with the people, you are disconnected with Gandhi. Gandhi was not, the best orator. Yeah, his face is like hero-like face. But his connect with the people. It's and at a time when their communication was so limited, Mahatma Gandhi connected beautiful with the masses of India. Yeah, masses of the India, without any charisma. There is no charisma. Right. So, if they connect have been lost, then your connect with Gandhi have been lost. So, but connect cannot snap off, at just one time. It's a gradual process, right? You can't just snap off a connect. It is a gradual process. So, you mean to say it's before 8 or 10 years the connect started waning away? Yeah. Okay. So, at that point of time, so it was Mahatma Gandhi which attracted you to the Congress party, right? Yeah. Okay. So, in your letter addressed to Arjun Kharge, the Congress president, the National Congress president,
one line stood out in your letter where you said that Rahul Gandhi created a ruckus in Assam, जी, right? yeah. So, can you tell us something more? Like, what according to you is a ruckus? Any national leader, Hmm. any national leader of any political party, Hmm. or any national top leader Hmm. of any political party should behave, not in such a way. Okay. He should be above everything. मतलब above everything का मतलब आप क्या मीन्स जो एक्शन आपका है वो स्ट्रीट लीडर की तरह नहीं होना चाहिए. ओके. आपका एक्शन है वो एक जो आप तक के हमारे नेशनल लीडर बहुत सारे हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में, सब जगह, चाहे जवाहरलाल नेहरू लो, इंदिरा गांधी लो, राजीव गांधी लो, अटल बिहारी वाजपेयी लो, चाहे जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र मोदी लो, स्ट्रीट में आप जब जाते हैं आप, तो लीडर लाइक मी कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट ए नेशनल लीडर, टॉप लीडर, बट टॉप लीडर वो हमारे यहाँ एक क्या उनको बोलते हैं कि लैंडमार्क उसका बिहेवियर होना चाहिए. मैं ज़्यादा एलाबोरेट करना नहीं चाहता, लेकिन ये इसी लेवल पे होना चाहिए जो मैच्योरिटी दिखाए. वो आपको लगा कि राहुल गांधी का नहीं था असम में? उसमें मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी उसके बारे में. यस, ये नहीं करना चाहिए. Okay. According to you, like in the last assembly elections, all of us know that in the last assembly elections, Congress got 17 of the 182 assembly seats. और उसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 26 में से 26 सीटें लोकसभा की, गुजरात की, वो भाजपा ही ले गई. कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. आपके हिसाब से कांग्रेस इतनी वीक गुजरात में क्यों हो गई? देखो, ये तो मुझे उसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने की अभी ज़रूरत नहीं. अगर मैं कांग्रेस में होता तो मैं ज़रूर कहता कि मुझे हमें सब लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. फॉरगेट गुजरात तो नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है, और लोगों के साथ, गुजरात के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी का कनेक्शन कितना है हम सब ने देखा है. लेकिन नॉट ओनली गुजरात, व्हाई इन यूपी, व्हाई इन राजस्थान, व्हाई इन मध्य प्रदेश, व्हाई इन महाराष्ट्र, व्हाई इन हरियाणा, व्हाई इन दिल्ली वी लॉस्ट, व्हाई इन हिमाचल, व्हाई इन उत्तराखंड, एवरीवेयर वी लॉस्ट. तो उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और क्या आपका नैरेटिव में कहाँ कमी है, और आपका कनेक्ट कहाँ कम हुआ है, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए. कभी किसी ने किया है? आप लोग जब भी इलेक्शन तो हारते हैं तभी कमेटी और रिपोर्ट ये सब तो आता रहता है मीडिया में. कहाँ कौन देखता है? कहाँ कौन देखता है? हाँ. तो मतलब आप बेचते थे, पर कोई उसके ऊपर चर्चा विमर्श नहीं होता था? मैं जब प्रेसिडेंट था तब तक तो ये ऐसी रेगुलर एक्सरसाइज कहीं ना कहीं होती रहती थी. उसके बाद भी स्टेट लीडरशिप ने प्रयास किया ही होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा डिलिब्रेशन कभी हुआ है. ओके. तो आप अब तक जो हमारी बात हुई उससे वी कैन डिड्यूस, और हम आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि राहुल गांधी मेन कारण है आपका कांग्रेस छोड़ने का. नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता. जो जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, कौन चला रहे हैं वो दिल्ली में बैठे सब लोग जाने.
लेकिन जिस तरीके से चल रही है उससे तो ये हुआ है कि हम विपक्ष में भी नहीं रहे। आज जो रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए वो 10 साल से हम दिल्ली में नहीं है और 2022 से गुजरात में नहीं है। ये क्यों हुआ? तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि सर 2010 नहीं, 2010 में 2000 नहीं, 2022 में गुजरात में नहीं और 2014 से हम लोकसभा में नहीं। ओके। हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन या रिकॉग्नाइज्ड लीडर, पर वो तो भाजपा की भी पहले 2 ही सीट आती थी, फिर भी उनको ऑपोजिशन का दर्जा तो दिया जाता था ना पार्लियामेंट में। ये नहीं, पार्लियामेंट में नहीं दिया जाता था, गुजरात में दिया जाता था। गुजरात में हम 2000 में 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जो 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस समय दिया गया था, उसमें ना नहीं। लेकिन दिल्ली में तो जो ये 10% वाला आज तक चला रहा है। ओके। मीडिया में, कई मीडिया में या कई कांग्रेस के नेता ऐसा बोलते हैं कि जो भी भाजपा में जा रहे हैं वो या डर के कारण जा रहे हैं या कोई लालच के कारण जा रहे हैं। देखो, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है हर वक्त, लेकिन आप तो गुजरात को अच्छी तरह जानते हैं, एक एक लीडर को जानते हैं, और मैं कितनी हद तक मैंने फाइट करता था तो गुजरात में पूरा इंडिया जानते हैं। लेकिन आज तक मेरे घर पे कभी पुलिस नहीं आई। ईडी सीबीआई की बात छोड़ दीजिए, एक भी दफ़ा मेरे घर पे पुलिस भी नहीं आई। मैं चैलेंज करता था लेकिन कभी नहीं आई, और मुझे कोई किसी ने डराया भी नहीं और मैं डरा भी नहीं। मैं ये नहीं कहता था कि मुझे फेवर की जाती थी, लेकिन मैं कभी डरा नहीं और डराया भी नहीं। दूसरों, मान लीजिए आपने ही कहा कि मैं तो बहुत ही अग्रेसिवली अटैक करता था, तो भी मुझे नहीं हुआ। लेकिन मेरी बात छोड़ दीजिए, और हमारे 4-5 सीनियर लीडर हैं मेरे सिवा, किसी को भी एक पुलिस केस किसी पर भी नहीं। बाकी जब धुआं निकलते हैं तो कहीं आग तो लगती होगी, किसी के यहाँ ईडी जाती है, किसी के यहाँ सीबीआई जाती है, तो ये उसकी अलग बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि उनके घर पे क्यों जाए, लेकिन मैं तो बार बार कहता था यहाँ कि मेरे घर पर भेजिए आप, लेकिन कभी नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि कोई ऐसी तरह जो आप बोलते हैं कि जो आपके सामने जाते हैं उसको वहाँ ईडी भेजा जाता है या उसके यहाँ सीबीआई भेजी जाती है। कभी हमारे घर पर पुलिस भी, लोकल पुलिस कांस्टेबल भी नहीं आया। हाँ, मुझे गुजरात पुलिस ने मेरे पर थ्रेट थी तो मुझे प्रोटेक्शन दे कर रखा है, आज तक दे रखा है। मैं एल ऑफिसर था तब भी था और आज भी है, मुझे कभी तक तकलीफ नहीं हुई। वो मुझे थ्रेट थी, वो उसका रीज़न भी हमारे कुछ इश्यू थे इसलिए। लेकिन ये बात कहें हम कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लालच दिया जाता है, अगर लालच भी होती मुझे तो मैं आज क्यों जाता। आज तो बीजेपी को कोई मेरी ज़रूरत भी नहीं है। गुजरात में उसके पास 156 सीट है। मैं वही सोच रही, मुझे यही और दूसरा मैं आपको कहा 26 में से 26 सीट उनके पास है। राज्यसभा में भेजने के लिए हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज किसी भी तरह मेरी जरूरत नहीं, किसी भी तरह की जरूरत नहीं। प्लस बीजेपी में प्लस अर्जुन मोढवाडिया या माइनस अर्जुन मोढवाडिया, रिजल्ट आना है वही आएगा। 26 से 26 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये भी तय है। तो भी भारतीय जनता पार्टी तो मेरा स्वागत करती है, मुझे कोई उनको एतराज नहीं है यहाँ। उसका मतलब ये है कि भाई जो कार्यकर्ता में थोड़ी की स्ट्रेंथ है तो उसका
देश निर्माण में कहीं उपयोग करें। हम्म, तो मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह ने दोनों ने परमिशन दी मुझे ज्वाइन करने की। हम्म, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे यहाँ के CR पाटिल जी और भूपेंद्र पटेल जी, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। हम्म, तो मैं ज्वाइन हो गया। उसको तो ज़रूरत नहीं है, हम्म, तो भी उसको लगा कि मेरी कोई ये एक काम में आज कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ज्वाइन हुआ। हम्म, और जिस समय मैं तो पहली दफ़ा चुना गया था, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा राज्य होगा कि जहाँ फर्स्ट टर्म में कोई CLP का विरोध पक्ष के नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना हो, और ये भी यंग एज में, तो भी मुझे बनाया गया था उस समय। आपकी फर्स्ट टर्म थी? फर्स्ट टर्म थी, हाँ। और आई प्रूव्ड, आई गिव माय ब्लड एंड स्वेट, और मैंने काम भी किया, एज ए प्रेसिडेंट भी किया, एज ए LOP भी किया। लेकिन जिसके लिए मैंने खून पसीना दिया हो, उसको मेरी शक्ति की जरूरत नहीं होगी, यहाँ कुछ होगी। पर आप ही बोल रहे हो कि आपको फर्स्ट टर्म में लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाया गया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कांग्रेस ने भी आपको दिया, राइट? कांग्रेस की परमिशन से ही आप बने होंगे? नहीं, कांग्रेस ने ही मुझे बनाया। हाँ। इसलिए मैंने जब निकला तब मैंने आभार व्यक्त करके निकला हूँ, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि प्रेसिडेंट तो मैं भी बना था, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी मैं भी बना था, और लोग भी बने थे। लेकिन जिस डेडिकेशन से मैंने किया, तो मैंने प्रूव किया कि लीडर ऑफ ओपोजिशन क्या होते हैं। मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने भी ये भी प्रूव किया कि क्या होता है। पूरी ताकत से हमने काम किया वो, ऐसा नहीं है। मैंने दिया, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा नहीं था कि ये रेड कारपेट थी, तो लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया था। मुझे कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली में नहीं बनाया गया था, या विदाउट इलेक्शन मुझे कहीं नॉमिनेट भी नहीं किया गया था। लेकिन मैं चुन के आया, और लगा पार्टी को और हमारे MLA को, तो मुझे बनाया गया। उस समय के MLA थे, उसकी सेंस ली गई थी, और उनके बाद मुझे बनाया गया था, और मैंने प्रूव कर दिया था। उसके बाद ही मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस समय की लीडरशिप को अच्छा लगा होगा, आज के समय की लीडरशिप को मैं ठीक नहीं लगा होगा। आपने 40 साल बिताए कांग्रेस में। कांग्रेस में आपका फेवरेट पास्ट में, या जो भी आपके कौन फेवरेट लीडर्स रहे? हाँ, ये नाम देना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। लेकिन मैंने जब तक काम किया तब तक मुझे लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके। मैं जब तक प्रेसिडेंट रहा तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो लीडरशिप आई, उसके बाद तो सारे देश में कांग्रेस की क्या हालत हुई सबको मालूम है। और उसके बाद कितने लोग छोड़ के चले गए, मुझसे भी सीनियर। मैंने तो 40 दिया, लेकिन कुंवर जी भाई बाबड़िया, नहीं, ये तो आप यहाँ की बात करते हैं। हाँ, नेशनल लेवल पे जो फ्रॉम गुलाम नबी आजाद टू कैप्टन सुनील जाखड़, जगन रेड्डी, हेमंता बिस्वाल शर्मा, कौन नहीं गए। पूरा यूपी की लीडरशिप चली गई। मध्य प्रदेश में थे कितने लोग गए, जो मैं तो कभी भी दिल्ली की कोठरी में नहीं था। पर ये कमलनाथ से लेके जो भी वहां थे, वो सब वहां चले गए। तो कुछ रीजन तो होगा। कितने सारे सीनियर लीडर्स जा रहे हैं। हाँ, कितने सारे सीनियर लीडर्स जा रहे हैं। और ये उसका मतलब ये है कि आज के दिन में डेमोक्रेसी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी चाहिए। उसके बिना डेमोक्रेसी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। तो अभी तो ऑपोजिशन की बात छोड़ दीजिए। हाँ। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी रिलेवेंट होने के लिए भी उसको रीथिंक करना पड़ेगा, रिलेवेंट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। तो अभी आप भाजपा में आ गए, फिर भी आप मानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विरोध पक्ष होना चाहिए? कहीं भी
क्यों कोई भी बात, ये तो है कि मेरा रूल्स नहीं है, डेमोक्रेसी का रूल है कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑपोजिशन पार्टी तो होनी चाहिए। ये तो ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है आज के दिन में। तो आप 8-10 साल पहले की लीडरशिप और अभी की लीडरशिप, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मिसेस सोनिया गांधी या और किसी ने आपको कांटेक्ट किया कि आप रुक जाइए कांग्रेस में, ऐसा डिसीजन नहीं मत लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ किसी ने अप्रोच मीन्स आप जिसका नाम ले रहे हैं उसमें से किसी ने नहीं किया। ओके, I think that was a very enlightening discussion, and Arjun Bhai has always been known for speaking out his mind, and we could remarkably mark the decency with which, because he still would not want to criticize any particular Congress leader by name. And of course, it is evident that he appears to have been messed up by the attitude of national leadership of Congress, especially it seems Rahul Gandhi and those close to him. We wish you all the best for your new innings, and we hope you will continue to raise the voice of every average Gujarati in whichever position or party that you are with, because in a democracy, I think that is what matters the most. Thank you very much once again.